Welcome to Learn to Speak English. In this lecture, we will understand the main difference between since and for. Basically, where we use since and for. We use since and for in perfect continuous tense of past, present and future. वीडियो में हम सीखेंगे मेन डिफरेंस सिंस एंड फोर का, इनमें डिफरेंस क्या है एंड मेनली इसको यूज कहाँ करते हैं. इसको यूज किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, चाहे वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या फिर प्रेजेंट का हो. Basically, the main difference between since and for is that we use since when we know the exact time when work had started, and we use for when we know the duration. If we take example of since in a time like 2 p.m, 5 p.m और 4 p.m etc. अगर हम since का example लेते हैं तो 2 p.m, 4 p.m और 5 p.m इत्यादि. Like I have been reading book since 2 p.m. मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ. And in 4 it will be like 4 hours, 5 hours, 6 hours. 4 में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे. For example, I have been reading book for 6 hours. मैं 6 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ. Let's take example in day in since Monday, Tuesday, Wednesday, etc. For example, I have been playing game since Monday. मैं सोमवार से गेम खेल रहा हूँ. And in 4 it would be like 4 days, 5 days, 6 days. For example, I have been playing game for 5 days. मैं 5 दिन से गेम खेल रहा हूँ. Take example of since in month. Month में example लेते हैं since का. It would be like January, February, March, etc. For example, I have been cooking since January. मैं January से खाना बना रहा हूँ. Let's take example of months in 4. It would be like 4 months, 5 months, 6 months, etc. I have been cooking for 5 months. मैं 5 महीनों से खाना बना रहा हूँ. Let's take example of years in since. ईयर्स के एग्जाम्पल लेते हैं सिंस में. इट वुड बी लाइक 2010, 1999, 2000 etc. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन डूइंग जॉब सिंस 2010. एंड इन फोर इट वुड बी लाइक 4 years, 5 years, 10 years. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years. मैं 10 सालों से नौकरी कर रहा हूँ. नोट फॉर सिंस. सिंस के लिए नोट. हम सिंस यूज़ करते हैं चाइल्डहुड से पहले, लास्ट नाइट से पहले, यस्टरडे से पहले. वी ऑल्सो यूज सिंस बिफोर चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग, लास्ट नाइट, यस्टरडे. नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंस एंड फोर. मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे हमें सिंस एंड फोर किससे पहले यूज़ करना चाहिए. डू इट बाय योर सेल्फ. आंसर मी इन अ कॉमेंट सेक्शन. फर्स्ट इज 20 May, 3 weeks, 4 months, January, Monday, Tuesday, 10 years, 15 years. Thank you for watching this video. I hope you understand all the concepts. If you have any query, any questions, you can ask me in a comment section. मैं आशा करता हूँ आपको सारे concepts समझ में आ गए होंगे. अगर आपकी कोई query है, कोई question है, आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं. Thank you so much. Please like, share and subscribe.